Pardon? A very good morning to all of you. I'm Vaibhav Chaudhary, oil and gas analyst. So today we will be discussing about the results preview. आपको जैसे मालूम होगा कि results आने वाले हैं सारी companies के, so हम oil and gas के preview पे बात करेंगे. So basically आपने देखा होगा कि oil and gas में इस quarter में काफी movement रहा. Oil $52 पर बैरल ब्रेंट के आसपास टच हुआ. पीछे का रीजन क्या था कि ओपेक से न्यूज आया था कि दे वुड बी कटिंग अप द प्रोडक्शन. सो मैं उसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा. ये 8 साल में पहली बार हुआ है. ओपेक यूज्ड टू बी अ प्राइस डिसाइडर इन द सेंस कि वो सप्लाई को मैनेज करता था. अगर बहुत ज्यादा सरप्लस हो रहा है तो वो क्या करता था, सप्लाई कट कर देता था, तो जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चले जाते थे. और फिर अगर सप्लाई डेफिशिएंट चल रहा है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता था. तो इस तरीके का वो कुछ मैनेजमेंट करता था जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो अंडर कंट्रोल रहते थे, या ओपेक ही एक तरीके से इनडायरेक्टली डिसाइड करता था. बट पिछले 8 सालों में क्या हुआ कि ओपेक ने अपनी ये स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है. और उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्शन, क्योंकि उनको मार्केट शेयर अपना कैप्चर करना था, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन पे उन्होंने कोई मतलब रोक नहीं लगाई. तो जिसकी वजह से उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बाकी यूएस का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिसका रिजल्टेंट ये निकला कि ग्लोबली ऑयल क्रैश हुआ अराउंड $100 से $40 के आसपास, फिर 35-30 इस तरीके से आगे क्रैश हुआ. बट अभी क्या है, वापस ओपेक सप्लाई मैनेजमेंट में आ गया है, तो जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि स्टेबल रहने चाहिए. हालांकि इस क्वार्टर में काफी वोलेटाइल था, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आगे ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेगा. बट हमारा ब्रॉड आउटलुक यही है कि ऑयल अभी $45 से $60 के बीच में रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. उसके बाद आगे जिस तरीके की ये लोग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो उस हिसाब से ऑयल के प्राइसेस में फर्दर मूवमेंट होगा. करेंगे हम अपने प्रीव्यू के बारे में, जो भी कंपनीज ऑयल एंड गैस के यूनिवर्स में अंडर कवरेज है. तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज हर बार अपने जीआरएम्स काफी हाई देता है. इस बार का एक्सपेक्टेड ये है कि अराउंड 10 से 10.5 पर बैरल के आसपास इसका जीआरएम आने वाला है, एज कम्पेयर टू $11.5 पर बैरल इन व्हाट इट्स ऑन अ क्वार्टर बेसिस. पीछे का रीजंस क्या है कि प्रोडक्ट क्रैक्स काफी डाउन है इस क्वार्टर में. डीजल क्रैक्स डाउन है, गैसोलीन क्रैक्स डाउन है, नाफ्टा क्रैक्स डाउन है. तो उसकी वजह से जीआरएम्स पे इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा. पिछले क्वार्टर में जैसे इन्वेंट्री गेन था, तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री गेन नहीं होगा, थोड़ा इन्वेंट्री लॉस हो सकता है अगर उन्होंने अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया होगा तो. हालांकि रिलायंस बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैनेजमेंट अपना करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, तो जिसकी वजह से उसको कभी भी इन्वेंट्री गेन या लॉस बहुत ज़्यादा हाई उसमें नहीं होता है. तो एक्सपेक्टेड ये है कि रिलायंस को कुछ भी नहीं होगा. तो रिलायंस का जीआरएम अराउंड $10 के आसपास आने वाला है. बट रिजल्ट जो होगा वो एवरेज आएगा. एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वार्टर पे इम्प्रूवमेंट आएगा. तो रिलायंस का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि एवरेज रहेगा. करंटली स्टॉक अराउंड 1078 पे है, 1078 पे. एक्सपेक्टेड हमारा जो टारगेट प्राइस है रिलायंस का 1200 का है, जो जियो के वैल्यूएशंस को इंक्लूड नहीं करता है. बात करेंगे अपने ईएनपी प्लेयर्स पे, जैसे ओएनजीसी, केन इंडिया एंड ऑल इंडिया. तो ओएनजीसी पे एक्सपेक्टेड ये है कि रिजल्ट, क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इस समय $45.2 पर बैरल है, एज कम्पेयर टू $47.2 पर बैरल प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से. तो ओएनजीसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि खराब आएगा. वॉल्यूम्स भी फ्लैट रहेंगे, प्लस मेजर इम्पैक्ट गैस प्राइसेस का भी है. हालांकि उसका पूरा इफेक्ट जो है हमको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा. गैस प्राइसेस जो थे पहले $3.1 पर MMBTU थे, उसको गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 2.8 किया, और फर्दर नेक्स्ट 6 महीने के लिए वो रिवाइज होकर $2.5 पर MMBTU हो गया. ओएनजीसी का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे सिर्फ गैस का, तो वही अभी इस समय $3 से $3.2 पर MMBTU आ रहा है. ये मैं एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका डीप गैस फील्ड्स भी हैं और ऑनशोर फील्ड्स भी हैं. तो इस हिसाब से ओएनजीसी को अभी गैस प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें तो लॉस में चल रहा है. बात करेंगे केन इंडिया के बारे में. तो केन इंडिया का भी रिजल्ट फ्लैट एक्सपेक्टेड है. हालांकि कोई खास ऐसा मूवमेंट इसमें भी नहीं होने वाला है. ऑयल इंडिया का भी रिजल्ट फ्लैट आएगा, क्योंकि ये सारी इनकी अर्निंग्स टाइड अप होती है ऑयल के साथ में, ऑयल प्राइसेस के साथ में और गैस प्राइसेस के साथ में. तो ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस जो है इस समय $45 पर बैरल का एवरेज बन रहा है. तो ईएनपी कंपनीज का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है ऑल इन ऑल की एवरेज से खराब आने वाला है, उसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होगी.
OMCs की अगर बात करें तो रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आएगा, बाकी BPCL की बात करें तो एवरेज रिजल्ट आएगा क्योंकि प्रोडक्ट ट्रैक्स जो है वो खराब है या स्टेबल है इस समय। BPCL का जो GRM एक्सपेक्टेड है वो अराउंड $5 पर बैरल के आसपास एक्सपेक्टेड है एज कम्पेयर टू $6.1 पर बैरल क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से। BPCL का हमारा टारगेट प्राइस अराउंड 800 का है, करंट मार्केट प्राइस 668 है, विच गिव्स अराउंड 20% अपसाइड। उसी तरीके से अगर हम इंडियन ऑयल की और HPCL की बात करें तो दोनों पे टारगेट प्राइसेस ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस HPCL पे है जिसका टारगेट प्राइस अराउंड 600 है, करंट CMP अराउंड 438 का 37% अपसाइड है। रैंकिंग में अगर देखते हैं तो सबसे ऊपर में HPCL की रैंकिंग है, फिर BPCL है, फिर IOCL की रैंकिंग है। HPCL को ज़्यादा टारगेट प्राइस इस वजह से मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में अभी बात चल रही है कि मार्केटिंग मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होंगे पेट्रोल और डीजल के। सो इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट जितने भी OMC प्लेयर्स हैं इस समय काफ़ी अच्छी उनकी मूवमेंट आ रही है, और उम्मीद ये है कि HPCL में ज़्यादा मूवमेंट आएगी क्योंकि HPCL का 70% जो बिजनेस है वो मार्केटिंग से है, बाकी 30% बिजनेस जो है वो आपका रिफाइनिंग से है। BPCL और इंडियन ऑयल जो है वो उनका बिजनेस जो है मार्केटिंग और रिफाइनिंग का वो एक तरीके से 40 और 60 के रेशियो में है, तो इस वजह से उन पे कम इम्पैक्ट आएगा अगर मार्केटिंग मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होता है। बात करेंगे गैस कंपनीज की, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मतलब गैस प्राइसेस अभी कम हुए हैं तो उसमें IGL को आने वाला है। IGL को ऑलरेडी आ चुका है, IGL में काफ़ी रनअप भी देखने को मिला है, और गेल में आने वाला है। गेल के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि काफ़ी अच्छे आएंगे। वॉल्यूम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा अराउंड 98 MMSCMD, जो 9% अप होगा ऑन ईयर बेसिस। गेल पे हमारा टारगेट प्राइस अराउंड 600 का है, करंटली स्टॉक 428 पे कोट कर रहा है, 40% अपसाइड है करंट CMP से। IGL की अगर बात करेंगे तो IGL का भी वॉल्यूम अराउंड 4.4 MMSCMD रहेगा, जो कि 7.7% अपसाइड ऑन ईयरली बेसिस। IGL पर टारगेट प्राइस हमने रिवाइज करके 1000 का किया है, करंट CMP अराउंड 847 का है। जो हमारा पुराना रिजल्ट अपडेट निकला था उसमें अराउंड हमने 730 का टारगेट प्राइस दिया था। स्टॉक उस समय अराउंड 600 के आसपास कोट कर रहा था। पेट्रोनेट का भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि RLNG वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं। जो उसका कैपेसिटी है वो अराउंड 120% के आसपास पे चल रहा है, तो पेट्रोनेट का टारगेट प्राइस अराउंड 500 का है, ये भी हमने रिवाइज किया है अपसाइड पे। इट्स 25% अपसाइड फ्रॉम करंट CMP ऑफ 400। दहेज का वॉल्यूम अराउंड 3.1 मिलियन TN आएगा। रीगैसिफिकेशन मार्जिन भी एक्सपेक्टेड है कि हायर होना चाहिए इसमें। स्पॉट मार्जिन अराउंड 10 रुपीज पर SCM चल रहा है इसमें। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखते हैं तो जो गैस कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। बात करेंगे MRPL की और चेन्नई पेट्रो की, तो इनके भी रिजल्ट्स एवरेज से थोड़े खराब होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट PSUs के अंदर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जिस हिसाब से पिछले क्वार्टर में इनको इन्वेंट्री गेन था तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉस होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों पे स्टॉक प्राइसेस पे हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा है। MRPL पे टारगेट अराउंड 120 का है, करंट CMP 91 का है, तो 31.8% अपसाइड है। चेन्नई पेट्रो पे भी ऑलमोस्ट चेन्नई पेट्रो काफ़ी रन अप किया था, लेकिन अभी स्टॉक वापस डाउन है क्योंकि एंटिसिपेशन यही है कि OMC स्पैक के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आएंगे, तो इसकी वजह से चेन्नई पेट्रो वापस डाउन हुआ है। इस पे टारगेट प्राइस हमारा 365 का है, करंट CMP अराउंड 286 का है, विच ऑफर्स 27.6% ऑन एन अपसाइड। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें देखें तो ऑयल एंड गैस पैक में ENP के रिजल्ट्स खराब आएंगे, OMCs के रिजल्ट्स एवरेज आएंगे ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपके गैस पैक्स में आने वाले हैं, जिसमें मेजर आपका IGL है, गेल है, पेट्रोनेट है, GSPL है। तो अगर पोजीशनिंग की बात करें तो आप आई थिंक कि हम गैस पैक्स में पोजीशन ले सकते हैं, और रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से स्टॉक में काफ़ी रनअप की उम्मीद है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल पास ऑन टू मयंक फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन। मैं इन्फोसिस के रिज़ल्ट रिव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड TCS के रिज़ल्ट रिव्यू के बारे में भी। इन्फोसिस का रिज़ल्ट कल आया था एंड हमारे एस्टिमेट से स्लाइटली ज़्यादा था। तो US डॉलर टर्म्स में उनका रेवेन्यू आया था $2.587 बिलियन,
हमारे एस्टिमेट के अगेंस्ट जो $2.561 बिलियन था, 1% वेरिएशन था हमारे एस्टिमेट के सामने। बाकी रुपी टर्म्स में रेवेन्यू था 173 बिलियन रुपीस पे, वर्सेस आर एस्टिमेट जो था 171.385 बिलियन, तो 1% का वेरिएशन वहां पे भी था। इन्फोसिस का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था Q2 के हिसाब से। उन लोग ने कमेंट्री भी दिया था कि Q2 का रिजल्ट Q1 से बेटर रहेगा, एंड उन लोग के मेन सर्विसेज में परफॉर्मेंस आया था वो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में, एंड सेकेंडली कंसल्टिंग में उनका 3.4% का ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लास्ट मेनी क्वार्टर्स से उनका कंसल्टिंग में डी ग्रोथ आ रहा था, और मैनेजमेंट ने बहुत कोशिश की कि ये डी ग्रोथ अरेस्ट करने को, और फाइनली ये क्वार्टर में ग्रोथ आया है। हाउएवर उनका जो गाइडेंस था, जो FY17 एस्टिमेटेड गाइडेंस था, जो उन लोग ने Q1 में ऑलरेडी डाउनग्रेड किया था टू 10.5 to 12%, वो फर्दर डाउनग्रेड हुआ टू 8 to 9%। तो ये एक नेगेटिव चीज है। उसके अलावा उनका जो बिलिंग रेट पर एम्प्लॉय है उसमें भी ज्यादा ग्रोथ नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है। वॉल्यूम्स में 4% का ग्रोथ आया है, बट बिलिंग रेट में काफी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, जो एक ट्रबलिंग साइन है। तो ऑल इन ऑल हम लोग का इन्फोसिस पे करेंटली टारगेट है 1088 रुपीज का। होल्ड रेटिंग दिया है हम लोग ने इन्फोसिस पे, तो एनी डिप इन दिस स्टॉक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाता है। ये हमारा व्यू है। अभी सेकेंडली TCS का रिजल्ट जो थर्सडे को आया था, TCS का रुपी टर्म्स में रेवेन्यू आया था 292 बिलियन रुपीस में, वर्सेस Q1 में जो रेवेन्यू था 293 बिलियन रुपीस, और Q2 FY16 मतलब सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर का 271.6 बिलियन रुपीस। जो MD हैं मिस्टर चंद्रशेखरन, उनके व्यू के हिसाब से इंडस्ट्री में काफी कॉशियस आउटलुक है, कस्टमर्स का स्पेंडिंग भी काफी कट कर चुके हैं कस्टमर्स, और यूके में भी जो ब्रेक्सिट हुआ उसके हिसाब से भी काफी क्लाइमेट थोड़ा डाउन ट्रेंड पे है कस्टमर्स के हिसाब से। तो अभी मैं TCS का मार्केट के हिसाब से जो ग्रोथ आए हैं वो मैं बताऊंगा। नॉर्थ अमेरिका रीजन में उनका 1.4% का ग्रोथ आया है, लैटिन अमेरिका में -0.2 जो फ्लैटिश ग्रोथ आया है। बाकी इंडिया में बहुत खराब परफॉर्मेंस आया था, जो -7.6% का डी ग्रोथ आया है इंडिया में। तो MD ने इस पे काफी कंसर्न्स रिफ्लेक्ट किए हैं, और ये मार्केट्स वॉच करने के लिए रखे हैं। बाकी इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में दिया है, जो 4.7% ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाकी BFSI जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उनके रेवेन्यू का, सिर्फ 1.2% का ग्रोथ आया है। तो वो भी एक चीज है जो वॉच करनी चाहिए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए। बाकी जो उनका अच्छा परफॉर्मेंस आया है वो एनर्जी एंड यूटिलिटीज में जो 3.6% का ग्रोथ आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका सर्विसेज के हिसाब से हाईएस्ट ग्रोथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आया है, जो 14% ग्रोथ दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके बाद इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज में जो अराउंड 4.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री तो दिया है कि नेक्स्ट Q3 एंड Q4 में अच्छा ग्रोथ आएगा, बट हमारा व्यू काफी कॉशियस है। ऑल्दो कुछ मेजर डिप आया IT स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली अक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी है। TCS में हमारा होल्ड रेटिंग है, टारगेट प्राइस 2415 रुपीज ऑन FY18 EPS, जो 163 रुपीज हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से आ रहा है, with a PE multiple of 14.8 times. That's it from my side. I will hand it over to Ankit for auto sector.
हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हम ऑटो सेल्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर हाफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने वॉल्यूम ग्रोथ बता दिए हैं एंड हम उसी के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी अच्छा रहा और कमर्शियल व्हीकल्स और मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो उसमें उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो पाया। कमिंग ऑन टू टू व्हीलर्स में मोटरसाइकिल ग्रोथ रहा 19%, मोपेड ग्रोथ रहा 35% एंड स्कूटर ग्रोथ रहा 27%। पैसेंजर व्हीकल्स में पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ रहा 13% ईयर ओ ईयर एंड 19% फॉर द Q2। ये ग्रोथ हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी व्हीकल्स में पाया गया, जो 40% से भी ज्यादा ग्रोथ उसने अचीव किया है। काफी सारे न्यू मॉडल्स पैसेंजर व्हीकल्स में लॉन्च हुए थे यूवी, स्पेशली यूटिलिटी व्हीकल्स के सेगमेंट में रेनॉल्ट क्विड से लेके काफी सारी मारुति सुजुकी की वितारा, काफी सारे मॉडल्स यहाँ इस सेगमेंट में लॉन्च हुए थे और उसी की वजह से काफी अच्छा ग्रोथ इसमें पाया गया है। ग्रोथ के भी कुछ रीजंस है। कुछ रीजंस ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन का, फिर बाद में 7th पे कमीशन का। लेकिन एक कंसर्न जरूर रहा है कि अभी तक फार्म इनकम में इतना ग्रोथ पाया नहीं गया है। फार्म इनकम ग्रोथ जो भी है वो होगा अक्टूबर के बाद। तो जितना भी हम जो ग्रोथ दिख रहा है वॉल्यूम में, वो हमें होलसेल लेवल पे दिख रहा है। रिटेल लेवल में अभी भी पिकअप होना बाकी है एंड यही एक कंसर्न ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। टू व्हीलर्स में हीरो ने भी काफी अच्छा ग्रोथ अचीव किया है, लेकिन ये ग्रोथ कौन से सेगमेंट में जा रहा है वो भी हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। उनका जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वहां पे भी काफी डिस्काउंट चल रहे हैं, तो डिस्काउंट के थ्रू ग्रोथ अचीव किया जा रहा है तो रिटेल पुश लाने के लिए। हालांकि जो सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट है वहां पे थोड़ा अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन मिला जा रहा है, उसकी वजह से बजाज ऑटो के वॉल्यूम्स काफी ग्रो हो रहे हैं। बट ओवरऑल पैसेंजर टू व्हीलर व्हीकल्स में हम इतना ग्रोथ होलसेल लेवल में दिख रहा है, लेकिन रिटेल लेवल में अभी भी ये ग्रोथ आना बाकी है एंड हमें लगता है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये जो ग्रोथ होगा वो काफी कम होते जाएगा, बिकॉज इन्वेंट्री बिल्डअप जो हुई है डीलर लेवल पे वो क्लियरेंस होने में टाइम लगेगा। सो हमारा व्यू ऑन हीरो मोटोकॉर्प काफी कॉशियस है। हालांकि नंबर्स, अगर हम Q2 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हमें मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख सकते हैं और हम देखें और थोड़ा हमें टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखेगा। हालांकि हम इतने पॉजिटिव नहीं है बिकॉज हमारे हिसाब से मार्केट ने ये सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुकी है। हमारा हीरो का प्राइस टारगेट है 3600, जो दैट इज अराउंड ओनली 4% का। इट इज एन होल्ड रेटिंग फ्रॉम आवर साइड बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग मेजर वॉल्यूम तो ग्रोथ ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में हम ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। बजाज ऑटो में हमारा 3300 का हमारा टारगेट है और रीजन ये है कि उनका जो सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट है, वी सेगमेंट है, वो काफी अच्छा पिकअप कर रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट्स ग्रोथ आना बाकी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में हम बोल सकते हैं कि वो काफी अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज भी वो काफी चीप है कंपेयर टू हीरो। हीरो ऑन FY18 चल रहा है 21 टाइम्स और बजाज ऑटो चल रहा है 19 टाइम्स, 19 to 18 टाइम्स। तो बजाज ऑटो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। कमिंग टू पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति काफी अच्छा ग्रोथ अचीव कर रही है। ये ग्रोथ हमें एंट्री लेवल सेगमेंट में इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है जितना न्यू वेरिएंट है वितारा ब्रेजा है ये, और ये जो सेगमेंट है ये काफी अच्छा सेल्स यहाँ पे पिकअप हो रहा है। एंड जो एंट्री लेवल जो सेगमेंट है वहां पे हमें ओला और उबर के थ्रू थोड़ा अच्छा सेल्स वहां पे भी दिख रहा है, जैसे कि वैगनआर में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है बिकॉज वो उन्हें ओला और उबर के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये काफी अच्छा सेगमेंट है एंड ओवरऑल मारुति भी हमें थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है, but we expect the Maruti to perform or to remain at this current level only after the results. Even we expect that it will continue to remain at this valuations. Coming to heavy commercial vehicles में BS4 का जो implementation होगा वो अप्रैल onwards होगा, तो न्यू व्हीकल्स बाइंग अभी हो नहीं रही है। अभी भी काफी वॉल्यूम ग्रोथ भी वो अभी इतना जल्दी नहीं आ सकता
and we are clearly little staying away from HCV segment right now. And this is it from the automobile segment. I'll hand over to Meloni to brief you about chemicals. I'm going to speak about Solar Industries. Solar Industries is the largest manufacturer of explosives, industrial explosives and initiating systems in India. It has around 30% market share in the Indian market and around 57% share in the exports. The company has around 25 manufacturing units across 10 states and 3 manufacturing units in overseas markets. Currently, the explosive industry is growing at 10 to 12% and accounts for 5% market share in the global market. So, 20% of the explosive demand comes from infrastructure and around 80% comes from the mining segment. So Solar's largest client is Coal India and accounts for around 27% of the revenue of Solar. So Coal India itself is targeting around 1 billion tons of mine production by 2020. So this is directly going to benefit solar industry. Also, there are a lot of government initiatives in the infrastructure segment, so which again will boost the revenues of solar. Solar, it has high, the explosive industry has high entry barriers around because they require licensing for every stage, that is manufacturing, storage, transportation. Also, most of these, also solar is located at 50 to 60 kilometers radius from all the mining regions. So that is another big entry barrier for other players. So this again is going to directly benefit when there is revival in the mining and infrastructure segment. So it is also entering, it has already entered the defense segment, and after the defense segment, which is open for private players, Solar was the first one to receive license to produce HMX and propellant products. So it is doubling right now, it's going to double its capacity in HMX by investing around 500 million. And the expected revenue from defense is going to be around 5 to 6 billion by 2020, and that is why. And after entering in the defense segment, it is the solar industry has the highest margins compared to its peers. It is also penetrating into new geographies like Africa, Tanzania, and other neighboring countries. So solar industry it is expected to grow at a revenue expected to have a revenue growth of 25% over the next 3 years, and it is trading at a PE of 38 times EPS of 17.4 at FY16 EPS. So we see significant upside from the current levels in solar industries. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग GE T&D इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको इंडस्ट्री बैकग्राउंड बता देता हूँ। GE T&D इस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में पावर का शॉर्टेज है, ऐसा सब मानते हैं, और इंडिया में लोड शेडिंग होता है, पावर कट्स होते हैं मेट्रोज को छोड़ के। सो इसका मेन रीज़न है ट्रांसमिशन। इंडिया में पावर जनरेशन के बहुत सारे प्लांट्स हैं, पावर अबंडेंस में जनरेट होता है, बट उसको जो ट्रांसमिट करने के लिए जो लाइंस लगती है वो ट्रांसमिशन लाइंस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मेजर रीज़न इंडिया में पावर कट होते हैं वो ट्रांसमिशन के वजह से होते हैं। तो गवर्नमेंट अभी काफ़ी फोकस कर रही है ट्रांसमिशन के ऊपर। आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जो है 8 स्टेट्स, वहाँ पे काफ़ी सरप्लस में पावर आता है।
और हम लोग अभी महाराष्ट्र साइड और साउथ साइड आ जाएंगे तो वहाँ पे पावर कट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट अभी ऑल ओवर इंडिया एक ग्रिड बना रही है, जिससे कि जो स्टेट में सरप्लस पावर प्रोड्यूस होगा उसका जो पावर है वो जहाँ पर डेफिसिट है वहाँ पे ट्रांसफर कर सके। तो ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में काफी ह्यूज कैपेक्स आएगा, अराउंड 5 लाख करोड़ का ह्यूज एक कैपेक्स ट्रांसमिशन इंडस्ट्री में आने वाला है। और सबसे बड़ा सेकंड ट्रिगर ये इंडस्ट्री में है, आप देख सकते हैं कि सोलार अभी काफी पिकअप कर रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जैसे आप जानते हैं अदानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पावर प्लांट इंडिया में लगा रहा है, विंड एनर्जी इंडिया में काफी आ रही है। तो एवरीवन सब हर कोई सोलार पावर में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसमें काफी अच्छा रिटर्न बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जब ये सोलार पावर बनता है हम इसे स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज इसका स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो जैसे ये प्रोड्यूस होता है इसको आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करके एंड यूजर तक पहुंचाना होता है। तो अब जैसे ये सोलार प्रोजेक्ट्स है ये बहुत रिमोट लोकेशंस पे होते हैं, कहीं तो विलेजेस के अंदर होंगे, बैरन लैंड पे होंगे, तो वहां पे अभी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है ट्रांसमिशन के लिए। तो जितना ज्यादा सोलार पावर बढ़ेगा उतना आपको ट्रांसमिशन लाइन लगेगा ये पावर जो सोलार प्रोड्यूस करता है उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें भी काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तो ये दो सबसे बड़े ट्रिगर्स हम देखते हैं। और नेक्स्ट बिग है गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, उदय प्रोग्राम आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं उसमें काफी करप्शन होता है, सब पॉलिटिकल रीजंस के वजह से। सो उनके पास बहुत ज़्यादा डेट होता है और उनके पास कैश नहीं होता कि वो नया एक कैपेसिटी डाले या नया ट्रांसमिशन लाइन डाले ताकि कंज्यूमर्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तो इसलिए गवर्नमेंट उदय प्रोग्राम के साथ आया है। इससे उनका इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी बचेगा, कंपनीज के पास काफ़ी कैश रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए और यही कैश ट्रांसमिशन में यूटिलाइज होगा। तो आगे जाके ट्रांसमिशन सेक्टर में काफी ह्यूज कैपेक्स आने वाला है। अब इसमें GE T&D क्या करती है? GE T&D एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट्स भी, ये ऑल तीनों सेगमेंट में प्रेजेंट है। प्रोडक्ट्स में ये लोग जैसे कि पूरा ग्रिड बनाना है, तो आप लोग कभी देखते होंगे हाईवे से जाते हुए बहुत जगह आपको सब स्टेशंस दिखते होंगे। तो सब स्टेशन बनाना, ट्रांसफॉर्मर्स लगाना, ऑल ओवर स्टेट में लाइन लगाना, ये GE T&D का काम है। और आफ्टर ये लगाने के बाद उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ, ये सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। जी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो मैनेजिंग ऑल द नेशनल ग्रिड। तो हम काफ़ी पॉजिटिव है ये कंपनी पे बिकॉज हम लोग के जो पावर मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो भी काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर 3,400 करोड़ का टर्नओवर किया था और कंपनी के पास 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है। तो नेक्स्ट 2 साल तक अगर कंपनी को ऑर्डर नहीं भी आया तो विजिबिलिटी है कि कंपनी का रेवेन्यू आएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव लगता है कि कंपनी का ग्रोथ यहाँ से काफ़ी अच्छा है। प्लस स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है, तो जैसे थोड़ा आगे डेवलपमेंट होता है ये कंपनी के बारे में और काफ़ी ट्रिगर्स आएंगे। ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका डेट भी अराउंड 500 करोड़ का है, जो 0.3% डेट इक्विटी रेशो है, काफ़ी कम है। सो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और प्रोडक्ट्स में जी वर्ल्ड का लीडर है, तो उनके पास वो मैनेजमेंट बैंडविड्थ है या उनके पास एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटीज है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम टाइमली कंप्लीट कर सकती है GE T&D। सो हमें काफ़ी पॉजिटिव लगता है। हम लोग इस कंपनी पे डिटेल में काम कर रहे हैं और मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आपको विद टारगेट प्राइस हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये बता सकते हैं। बट हम लोग ये स्टॉक पे काफ़ी पॉजिटिव है। Thank you very much. Now I will pass on to Shweta for banking updates. Thank you. Thank you, Nikhil. Good afternoon, friends. Banks have already begun with their Q2 FY17 results season with IndusInd Bank posting very good set of numbers.
So Q2 FY17 is equally strong both on the operating and earnings front. Operating profit stood pretty strong, which actually reported 27% Y-on-Y growth. Now, there was only one disappointment in IndusInd Bank results, and that was the fee income growth. So, fee income or the non-interest income component of IndusInd Bank grew only 23% Y-on-Y, whereas the loan book or the net interest income has grown almost 30% Y-on-Y. So somewhere fee income is lagging the strong loan growth, which is around 30%. However, and that was because there was some decline in trading gains during the quarter for IndusInd Bank. Otherwise, the loan processing fee or the core fee income remains very strong for IndusInd Bank. Asset quality less than 1%, that is 0.91% is the gross NPAs for IndusInd Bank, which is one of the best asset quality numbers in the industry. Overall profitability at 7043 million, which was almost 26-27% Y-on-Y growth, stood very healthy because NII was strong, asset quality stable. Another important factor in IndusInd Bank results were the net interest margins. Now, the target of net interest margins of 4% to be achieved by the end of FY17 has already been achieved in the current quarter itself, in Q2 itself. So the net interest margins at 4% came as a very positive surprise. Remember that IndusInd Bank is in the third phase cycle of growth, wherein they have chalked out 3D strategy. What is the 3D strategy of IndusInd Bank? One, first D is dominate. They look forward to dominate in their home markets, especially on the asset side, that is the loan book side. Secondly, differentiate. IndusInd Bank has been differentiating itself from all other private peers in terms of technology, in terms of product diversification. From last few quarters, a lot of investments have been made in product introduction of new products, cross selling of products. So that is something they are working upon for quite some time. And last but not the least, diversify. So IndusInd Bank has got almost 55% of their loan book into corporate and remaining 45% into retail. This ratio going forward will be 50-50, say by next year or maybe even end of this year. So a lot of diversification is happening on the retail front side. They are diversifying. They are already market leaders in commercial vehicle finance space. They have diversified into microfinance. We already have diamond jewelry portfolio, which is doing well. In fact, the diamond portfolio had moderated a bit in the last quarter, but that has picked up in Q2 FY17. So retail side, each and every portfolio is growing almost 19-20% odd. So operating profits or operating matrix stands very strong for IndusInd Bank. Asset quality, like I mentioned, stands stable. They have 5 accounts in SDR, but almost 4 accounts are on the verge of resolution. So resolution strategy is in place. No negative surprises ahead. One account in 525 scheme. Again, not a major account. No worries in gems and jewelry portfolio, to be very precise. So asset quality going forward, we are expecting another say 1% kind of GNPs for next year, which is still a very good number. Net interest margins, I'm expecting by next year 4.1%. It should stabilize at 4%. 1 year down the line, maybe should move around to 4.1%. So the kind of numbers which IndusInd Bank is posting each quarter is somewhere mirroring quality of HDFC Bank. Like I mentioned, even in previous conferences of ours, very similar to HDFC Bank, IndusInd Bank is growing its earnings and profitability as well as the core operating matrix. Balance sheet stands very clean, rightly supported by capital sufficiency. Tier 1 is somewhere around 15-16%, which is one of the highest tier 1 ratio. So capital in place, no need to raise capital going forward, no equity dilution. ROEs are currently around 16-17 odd percent. We are pegging it to grow almost 18-19% by the end of FY19. So the fact that earnings sustainability is there, the fact that net interest margins should stabilize around 4%, which are on the higher side.
There are no worries on any of the portfolios, even in the troubled sectors where they have their exposure. Corporate loans are purely investment grade, higher investment grade ratings. So they, okay, there was one negative thing was the corporate yields were down for the quarter, but again, cost of funds have improved. We all are aware that banks and NBFCs at a large are benefiting from lower cost of funds, so that is supporting net interest margins of most of these banks and companies. So all in all, growth levers are in place for IndusInd Bank. So against this backdrop, we have re-rated the multiple for IndusInd Bank. So earlier our target price was 1352. Now the target price of IndusInd Bank is 1500. So earlier we were valuing IndusInd at 3.2x, but like I mentioned, it's showing the quality of HDFC Bank. So now the target multiple for IndusInd Bank is 3.91x price to book FY18, and clearly we believe it deserves that kind of 3.94x multiple. So target price is 1500. We continue to maintain strong buy on IndusInd Bank. Coming to other Q2 FY17 result expectations for banks, we believe Q2 FY17 in terms of incremental stress addition will be better off quarter for most of the PSU banks in particular. We believe that banks like Punjab National Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, and Union Bank will post better numbers in terms of recoveries, upgradations, and like I mentioned, less stress addition. So incrementally, stress addition will be lesser for these five banks. In the private sector space, we are expecting a little tough quarter for Axis Bank. The watch list of Axis Bank stands pretty huge. We believe this quarter there will be little higher slippages for Axis Bank. However, operating matrix for Axis looks very strong. ICICI Bank, again, little slippages. However, slippages should start moderating. They also have huge watch list accounts, but we know that ICICI Prudential got listed. So ICICI Bank has got some value unlocking because of this listing. So that will continue to support the earnings performance of ICICI Bank, and hence no major negative surprises there. So all in all, we saw that FY16, 2H FY16 was the toughest for PSU banks. Even Q1 FY17 saw AQR, asset quality review by RBI, because of which there were higher slippages. H2 FY17 onwards will see this impact slowing down. We'll see improvement in numbers on asset quality for most of the top PSU banks. State Bank of India clearly stands out. Besides State Bank of India, we like Bank of Baroda and Punjab National Bank in the PSU space. We believe the liability franchise or the CASA strength of these banks will help them sail through these tough times. State Bank of India, we are not expecting any incremental stress addition. In fact, the good news which came few weeks back is that even the chairman of State Bank of India, Ms. Arundhati Bhattacharya, also got extension of 1 year. So that is another good positive. So she'll continue to help curtail any bad loan pile up ahead. Coming to the private sector space, I mentioned at the beginning, we continue to maintain an upward bias and a real conviction buy on IndusInd Bank kind of performance it is posting consistently after each quarters. It should definitely reflect the quality of HDFC Bank. HDFC Bank, clearly, we are expecting 20% growth on bottom line, stable asset quality, good numbers even on the NII front, that is the top line front. So we maintain a positive outlook on HDFC Bank. Kotak Mahindra Bank should start giving good numbers on the fee income front, on the earnings front, because now the ING Vysya Bank synergies are already in place. Now the benefits of these synergies will start flowing in. So we are expecting good set of numbers from Kotak Mahindra Bank, both on the top line and the bottom line front. Even the loan growth looks very strong for Kotak. Next in line, which we like from private space, is okay, one is IndusInd, one is HDFC Bank, one is Kotak. I think fairly covered. Axis, we are little cautious because of their asset quality.
ICICI Bank should do fairly well. Coming to the end, okay, in total, given our universe, we are expecting almost 15% profitability growth for all private sector banks under KR Choksi BFSI coverage. PSU banks profitability from the BFSI KR Choksi coverage, we are expecting decline in profits almost 10% Y on Y, purely because it has been FY16 has been really tough. So fall on effects will continue. However, incremental stress addition should lessen going forward. So no major worries as such. Coming to NBFC space, earnings growth and loan growth for NBFCs look very strong. Asset quality is something we have to watch out for NBFCs. Not that we are expecting anything negative, but provisions will be higher for few of the NBFCs, especially asset financier companies like Shriram Transport Finance, Mahindra Finance. From our coverage universe, BFSI coverage universe of KR Choksi, we continue to maintain positive outlook on Bajaj Finserv. Bajaj Finserv, we are expecting good numbers on the general insurance front. Life insurance is gradually picking up. Bajaj Finance, we are expecting good set of numbers. Cholamandalam Finance, because the vehicle finance space has been picking up. LCVs and SCVs are really looking up. So CV financing growth remains strong, and hence Cholamandalam earnings will be really on the higher side. Manappuram Finance again will surprise us positively in Q2 FY17. We are expecting almost 25 to 30%, almost 40% growth on the profitability front for Manappuram Finance. So our top picks in the NBFC space are Bajaj Finserv, Manappuram Finance, and LIC Housing Finance. LIC Housing Finance will be posting its results next week. We are upgrading the target price of LIC Housing Finance from 580 rupees to almost 756 rupees. Our new target price will be 756 for LIC Housing Finance. LIC Housing Finance clearly will show stable margins, lower cost of funds benefits, credit growth of almost 15-16% by the end of FY17. It's trading at 2.2x price to book FY18, which is very low multiple. If I were to compare LIC Housing Finance with HDFC Limited, which is the biggest player in the housing finance space, then it's trading at 5x multiple. Griha Finance is trading at 9.3x price to book FY18. Indiabulls Housing Finance is trading at another 3x. Then Diwan Housing, Indiabulls is trading at 2.7, 2.8x. Diwan Housing is trading at 3x, whereas LIC is trading merely at 2.2, 2.3x. So clearly there is re-rating which is going to happen going forward, because most of the growth levers are in place for LIC Housing Finance. So look out for positive numbers even from housing finance companies. LIC Housing Finance clearly is at one of the top picks besides Bajaj Finserv and Manappuram Finance. So all in all, good set of numbers from retail banks, from retail focused NBFCs, from Bajaj Finance and Bajaj Finserv. Top picks LIC Housing Finance and Manappuram. We like IndusInd Bank and HDFC Bank and even Kotak Mahindra Bank. From the PSU space, State Bank of India will be a clear outperformer. Bank of Baroda and Punjab National Bank will follow suit. So all in all, fairly decent Q2 FY17 can be expected. Thank you. Good afternoon. So I will talk about Sun Pharma result preview. So for Sun Pharma in the quarter second, we are expecting sales to be at 80.5 billion rupees. That is 17.5% year on year up, but it will be 2.3, 2.4% quarter on quarter down. So the sales will be impacted basically because of one product, jiski exclusivity thi Sun Pharma ke paas, that is Gleevec. So that has expired in September. So now the sales will start declining. That actually expired in August, so the sales will start declining now. So we are expecting EBITDA margins of 31.3%, which are close to 300 basis point year on year up, and the EBITDA would be 25 billion, close to that. So EBITDA will be up by 29% year on year, and it will be down 15% quarter on quarter.
The PAT for this quarter we are expecting at 16.5 billion, which is 49% up year on year. So in the last year of the financial FY16 Q1, there was a small charge. It was a one-time charge that Sun took, so that is why the PAT is very high. So the major highlights for the whole quarter would be to look at the commentary for Halol. So Halol is a very key plant for Sun Pharma, which we need to look at. It is contributing close to 15% to overall revenues. So this would be a very important step for them to see how the US FDA resolution is taking place. The second would be Taro's declining performance. So Taro is Sun Pharma's US business. It's a subsidiary of Sun, and the major focus of Taro has been dermatology. So in the past few years, derma space has become very interesting, where Sun Pharma has constantly increased prices because of its niche and kind of a monopolistic market over there with very few players. So in that front, now more players are entering the market. We can actually expect more pressure building on, and that is why last quarter there was a decline in profitability. So we have to see how the commentary is on that. The third part would be to see the US landscape, how the US markets are taking place and how the US sales is taking, because price erosion initially before the 2014 era, it was a very nominal kind of 5% at max, but now price erosions have increased and more competition is coming in. So we need to look how the market landscape is turning out. And the fourth most important point would be the differentiated strategy that Sun has actually maintained for its new assets. So Sun Pharma ने एक license किया था product Merck से. It's a biologic drug for psoriasis called MK3222, and it's actually tildrakizumab. So biologic drug है. There are only 9. Sun would be the 11th player in this particular market. So this is including the 3 already existing biologic drug जो 2003 से चल रहे हैं market में. So overall market is 7 billion, and in FY24 the market could be close to 20 billion as per our estimates. So we expect this to be a very good strategy by Sun to enter into this lucrative market of psoriasis, where Sun can actually gain a good handsome revenues, and this would be a very good step because Sun एक तरह से doctor connect increase कर सकता है and एक branded presence में US में आ सकता है. So we have a target price of 940 for Sun, and this is sum of parts target price. जिसके अंदर we are giving a 28 multiple to the FY18 EPS of 33, and we are giving 20 rupees of value per share NPV basis pay to the branded portfolio that Sun is planning to put forth in the US market. So that would be Spark's in-licensed products plus the Merck's in-licensed product. Thank you. Everyone, my name is Abdul. I'm a technical analyst here. Yesterday closed 8583, 10 points down on daily scale. On weekly scale, it is down by 114 points. I remember in our last webinar we recommended to stay cautious on the market. This time in a conference, morning conference calls, every time we initiate saying there is a formation which is happening, which is resembles falling channel pattern, and we were expecting levels of 8600. Most of the time, a market tried to hit the upper falling trend line, but however, it could not give a strong closing. So we were expecting 8,600 to appear in the market. On Friday, this last week, it breached 8,600 and made a low of 8,540. So at this point of time, the falling channel pattern, as the day passed by, it stretches down. So at this point of time, 8,500 market is heading. The falling channel pattern is indicating market could go even below that, until and unless we don't have a closing above 8,750, 8,700. We should not expect market to hit upper falling trend line. So at this point of time, with the trading happening where most of the trades are on the negative side, we could see a spike up, but at the end, market is going to test levels below 8,500, could be nearby to 8,500. On a medium term scale, we even mentioned we have a strong support at 8,400. So at this point of time, where the falling trend line is indicating a levels of 8,500, we remain positive in terms of medium term. Still 8,400 is market is holding that. If you put a weekly chart, there is a formation that quietly resembles a formation of a head and shoulder pattern. Now it depends on every analyst as to how it sees it. Someone could say it's a double top, someone can say it's a formation that is nearby to
head and shoulders. So I perceive it as a head and shoulders, and even that is indicating market heading towards 8,400. So we have 2 to 3 levels. One is 8,500. The other is indicating market heading towards 8,400. And on the candlestick pattern, if you have a closing below 8,500, then we could see a serious problem. So at this point of time, we continue to hold our stand on being cautious. But somewhere nearby to 8,000, if it appears in the market, if the market doesn't process 8,700 and we head towards 8,400, someone can look taking an entry point nearby to 8,400. If we have a strong weakness nearby to 8,400, then we could go we could see another a fall. But at this point of time, 8,400 remains a strong support for the market. Coming to Bank Nifty closed at 19,020. It's up by 65 points on daily scale. On the weekly scale, it is down by 370, 380 points. We have the similar formation, like we have a falling channel pattern. We even have a falling channel pattern on Bank Nifty, and we were expecting levels of 19,000 to appear. It went even below that at this point of time. On a trend line, falling trend line scale, 18,700, 18,600 seems to be a support, and on a spike up or on a rise, we see if it doesn't sustains above 19,300, then we could see levels of 18,700, 18,600. So for Bank Nifty also, we remain very cautious. We will not change our stand until and unless it gives a closing above 19,350, 19,300. Like we have a formations on Nifty, we have a similar sort of formations on Bank Nifty as well. It quietly resembles a formation of a double top or formation of a head and shoulder pattern. On a medium term scale, 18,000 levels remains a strong support for the market until it is not broken. We will not change our stand of say being positive, the stand of being a hold in the market. So on the basis of falling channel pattern as well as formation of a head and shoulder, we remain very cautious on the market. Somewhere nearby to 18,000, we can still generate a buy call in Bank Nifty. But at this point of time, I'm keenly watching levels of 19,300 on the upper side, and on the downside 18,600, 18,700. The stance remains. We are very cautious on this. Coming back to a few recommendations, one of my colleague Nikhil spoke about G and TND. This is the one we have spoken about few months back. This is nothing but the Elstrom TND we have recommended. We have recommended somewhere about 400, 450 rupees. It fell down drastically, and after that also I spoke on the webinar saying we still remain buy on this script. Looking at the fundamental development happening in this script, I hold my stand very strong. I see this script is having a strong potential. Looking at the chart only is indicating this script has a strong potential. Although it has given a strong selling pressure, it has seen a selling pressure, but I see levels of nearby to 700. I see very much potential in the scripts to work. If at this point of time where we are cautious on the market, I would not be keen in recommending any particular stock, but I'm very bullish on few stocks, and I'm waiting for few levels that would give us better entry. The three stocks that I would specify are Century Textile, Petronet, and we have been speaking about Biocon. So at this point of time, Century Textile, Petronet, they are trading at a higher level. So if market goes down and give us a potential entry point, then we would tell you to get entry into this. So at this point of time, I'm strictly focused on this Century Textile, Petronet, and Biocon. One update is we remember we have given a GSW steel call. There was a formation of ascending triangle pattern. It was somewhere about 1,300. It went up to 1,900. At this point of time, I don't recommend anyone to book profit. This script is entering into a second phase of a wave, or second phase of a breakout. If this script crosses 1,900 rupees, then it is going to shoot up towards 2,500 to 2,700. So at this point of time, where we are making a decent money, I would not say you book profit. Someone can say yeah, he's making a good money. You can book 50% of your profit, but stay long. If it crosses 1,900, the next level is 2,500, 2,700. In terms of a few of the recommendations we have given on sector basis were on sugar sector. We have made good recommendations on sugar sector. We have given Avut,
given Dwarkesh. One of the script that we are stuck at this moment is KCP, although it went up to 42 rupees, currently trading at 32. We are still buy on this script. The first phase of a wave or first phase of a rise, the sector has given, even for the sugar, it has given a rise from 30 rupees to 42 rupees. I see similar sort of uptick move in next after next 4 to 5 months, is somewhere in the month of Feb or March. We will get to see a second jump in this entire sector. So I remain bullish on sugar. We are currently working on few other sugar stocks that we can get a better entry. So for the KCP sugar, I still remain buy, and we are holding this spread. Yeah, this from my side. Thanks. Thank you, everybody. Thank you for participating in KR Choksi Samvad. I would request everybody that in case you have any kind of a stock specific requirement where we can have a detailed discussion on in next Samvad session, please please give us the recommendation on my email ID, so we can which are covered by KR Choksi Universe. So please let us know, and we'll help you in terms of detailed understanding of the stock. Part 2, where we would like to also share our disclaimer. Please hold for a minute. So I would request to everybody to go through this disclaimer. And recommend your clients accordingly. So in case of any kind of advisory support, please let us know. We will all surely help you on that side. Thank you very much. Thank you for joining Samvad.